That is for sure. So now, on the basis of history हम कैसे बताएंगे जो पेशेंट है उसको एम्बोलिक टीआई हो रहे हैं या फिर थ्रोम्बोटिक टीआई है? एनी गेसेस? ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री कैसे बताएंगे हम कि वो एम्बोलिक टीआई है या थ्रोम्बोटिक टीआई है? नहीं तो गेस ट्राई करो. ओके, हिस्ट्री ऑफ डीवीटी. एम्बोलिक विल बी सडन, बोथ सडन. रिलैप्सिंग टीआई है, एम्बोलिक. ओके, नाइस ट्राई. Okay, thrombotic will be during the morning hours mostly. Very, very good point. It is a very it is a very good point and taking point that yes, thrombotic will be early in the morning. But more than this, early morning तो है, बिल्कुल सही बात बोली आपने. लेकिन इससे भी ज्यादा अगर ये अर्ली मॉर्निंग है तो ये ड्यूरिंग एन एक्टिविटी होगा. तो इन सडनली व्हेन यू डूइंग एन एक्टिविटी, ड्यूरिंग एन एक्टिविटी होगा. बट दिस इज नॉट वेरी सैक्रोसैंक्ट. बट रिमेंबर, जो थ्रोम्बोटिक है वो थ्रोम्बोटिक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि एक वेसल है जिसके अंदर थ्रोम्बस बना हुआ है. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस हुई होगी और अब धीरे धीरे थ्रोम्बस बन चुका है. दैट मीन्स कि जब भी टीआईए होगा वो सेम वेसल में होगा. इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल टीआईए होता है किसी का जिसमें टीआईए होता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, मान लेते हैं एसीए का. तो लेग में वीकनेस होनी चाहिए. तो हमेशा लेग में वीकनेस होगी अगर वो थ्रोम्बोटिक है क्योंकि एसीए इन्वॉल्व है. लेकिन एम्बोलिक में the problem is not with the vessel. The problem is with the source of an emboli. जो जहाँ पे source of a thrombus है, जहाँ से emboli निकल रहा है, तो वो किसी भी वेसल में जा सकता है. So they will have varied presentation. Varied presentation. तो अगर आप वो बोलते हैं आपको हिस्ट्री में कि कभी तो सेंसरी लॉस हुआ था टीआईए में, कभी मोटर लॉस हुआ था, कभी कुछ और हुआ था. तो अगर हर टाइम या हिस्ट्री के हिसाब से there have been multiple episodes of TIA, but each time or most of the times, the presenting feature or the presenting complaint is completely different. Just for example, if there may be a transient loss of vision, there could be a transient loss of motor activity, monoparesis हो सकता है. There can be a history of transient sensory loss. तो उन conditions में आप हमेशा सोचेंगे कि this is an embolic TIA. और अगर thrombotic TIA होगा, तो thrombotic TIA में there will be always the same vessel that is involved. So there will be the clinical presentation will always be same. तो अगर TIA हो रहा है तो there will be अगर monoparesis हो रहा है तो there will be same sided same monoparesis every time because the vessel is involved. So remember the same presentation each time. Same presentation each time. Some people also like to call it slow TIA, and these are called as shotgun TIA. It's like shotgun fired suddenly. These are called as shotgun TIA. This is one important thing, how you differentiate on the basis of history whether this TIA is embolic or thrombotic. Okay. Point number one. TIA can also be divided into two parts. So it can now depending upon कि कौन सी vessel involved है. So for example, क्योंकि TIA है, TIA का मतलब थ्रोम्बस होगा या फिर एम्बोलिज्म होगा. अब वो वेसल आपकी कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस भी हो सकती है, आईसीए भी हो सकती है, और वो आपका वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम भी हो सकता है. दैट मीन्स again TIA can be of two types on the basis of the involved vessel territory. So it can be a carotid artery TIA, or it could be a vertebral artery TIA. Now try to understand. जब कैरोटिड आर्टरी टीआईए होगा तो क्या क्या प्रेजेंटेशन उसी पेशेंट के पास हो सकता है. देयर में बी हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिएंट, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड होगा. देयर में बी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ पावर मसल का, देयर विल बी मसल वीकनेस. दैट मींस देयर कैन बी ट्रांजिएंट सेंसरी लॉस, देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसरी लॉस. And the third possibility is there may be transient vision loss because of the involvement, because you know that the anterior the ophthalmic artery is also a branch of the internal carotid artery. So there may be vision loss. Okay. So these can be the possible presentations in case of a transient carotid artery TIA. Okay. Now, transient loss of vision is given a particular term. Can you name that term for me? Anybody? Transient loss of vision.
The particular term is given to it. Anybody who can try? Absolutely correct. It's amaurosis fugax. So there may be history of recurrent transient loss of vision. Now that happens when the carotid artery territory is involved. Once the vertebral artery territory is involved, so remember, जब भी vertebral artery की हम बात करते हैं, याद करो anatomy क्या है vertebral artery की. So a vertebral artery की anatomy इस तरह से है कि there are two branches of the two vertebral artery joined to form the basilar artery, which will give the cerebellar arteries. So the patient can present with transient ataxia. One of the features can be transient ataxia. Because cerebellum is involved. The other branches will be the pontine branches. So if the pons or any of the part of the brainstem is involved, that from the basilar artery, so remember that will present as cranial nerve deficit. There may be transient. So if the eighth cranial nerve is involved, there may be transient vertigo. There can be ataxia, tinnitus, hearing loss, hearing loss. There may be transient dysphagia because the 9th and 11th cranial nerves are involved. There may be transient dysphagia. One of the rare places where there is importance given to hiccups. There may be recurrent hiccups. So these are the possibilities when it comes to a vertebral artery TIA. So you can either divide TIA into an embolic type or thrombotic type, depending upon the pathology that is involved, and depending upon the vascular territory which is involved, you can divide it into carotid artery and vertebral artery, vertebral basilar artery territory involvement. Now, if the carotid artery is involved, so there may be transient loss of power, sensory, and vision loss. If the vertebral artery is involved, there may be transient ataxia, depending upon the cranial nerve that is involved. Lower cranial nerves are more commonly involved. So these will be the common findings. There can be postal hypertension as well. So these will be the common findings. So now, if you think of an embolic stroke, so the embolic stroke is sometimes present in the carotid artery, it is sometimes present in the vertebral artery. However, a thrombotic stroke will be limited. So either it will be all the time it will be a vertebral artery stroke, or all the time it will be a carotid artery TIA. This is one important thing that you should always keep in mind when you're talking about TIA. This is what we're talking about, the pathology of TIA. Next important thing that the examiners are very fond of asking कि अगर एक patient है उसको TIA हुआ है, so what are the chances of him developing stroke? Please make a note of this. If a patient has got a TIA, history of TIA, then 60 to 70% of these will develop stroke. Of these patients will have stroke in next 1 month. And this statement is exactly taken from the 19th edition of Harrison. This is very, very, very important. If anybody asks you, if a patient has got a history of TIA, what are the chances of him developing stroke? There are 60 to 70% of the chance that this person or these patients will develop stroke in the next 1 month. Of these 60 to 70%, 30% of them will develop in the first week itself. And rest in first month. So this is how common and how important TIA is. Once you find out TIA, you need to take a look whether it was an embolic TIA or a thrombotic. In both the situations, you need to put the patient on an antiplatelet and on an anticoagulant, lower down the chances of forming a thrombus. So I'll repeat again. TIA on the basis of pathology can be divided into embolic TIA and thrombotic TIA. Embolic will have different presentations. It will have different vessel involvement. Thrombotic will have similar vessel involvement. The other classification for TIA, it would be a carotid artery territory TIA or a vertebral basilar artery TIA. So depending upon the carotid artery, it can have the following presentations, and if the vertebral artery is involved, it can have the following presentations. More important to remember that TIA have got that the chances of developing a stroke following TIA is 60 to 70% in the next 1 month.
And this, out of this 60 to 70%, 30% of them will develop stroke in the first week after the episode of TIA itself. That finishes our TIA. Any doubts so far? And physiology of stroke. The next thing that comes into play will be the clinical feature. So till now, we know a lot of clinical features that are possible. Okay. So when we were talking about the anatomy, so anatomy and pathophysiology, we've talked about localization of stroke. So that was localization of stroke as per the territory that is involved. Clinical features, oblique important heading, as localization of stroke in neuraxis. Localization in neuraxis. So how do we localize it in the neuraxis? This is what we'll be doing in your clinics as well. So now, what are the chances? What are the places where stroke can happen, or where? What are the reasons for stroke? It can be in the cortex. It can be in the internal capsule. It can be in the internal capsule. It could be subcortical gray matter. Subcortical gray matter. Could be in the thalamus, ब्रेनस्टेम. ये पॉसिबिलिटी है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कहां पॉसिबल है द लीजन. वेरी सिंपल. रिमेंबर, अगर if the internal capsule is involved, you'll have dense hemiplegia. That means कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में वीकनेस इक्वल होगी. Plegia. Is there a possibility of sensory loss? Definitely there can be possibility of sensory loss as well, depending upon the fibers which are involved. Sensory loss हो सकता है. And third thing that can happen is a cranial nerve involvement. जो भी cranial nerve involve होगी उसका UMN टाइप लीजन होगा, लेकिन क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो अगर इंटरनल कैप्सूल जो है वो भी फाइबर्स को कैरी कर रहा है, वो न्यूरॉन्स को कैरी कर रहा है. तो ये जो न्यूरॉन्स है, जैसे हम पढ़ते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, वैसे ही कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट है. तो कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट इज अगेन यूएमएन टाइप ऑफ लीजन. यूएमएन टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा. कोई भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है. यूएमएन टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा. अगेन दैट गोज सेम फॉर इसके लिए देयर विल बी सेम सेंसरी लॉस, यूएमएन टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट. But there will be differential weakness. That means there will be difference in the weakness in both upper limb and lower limb. Remember, subcortical gray matter is a diagnosis of exclusion. यानी आपने सब कुछ रोल आउट कर लिया, आप कहीं और लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अब किसी और के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सबकॉर्टिकल ग्रे मैटर हो सकता है. ओके. अगर आपने बोला कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में ये सेम चीजें एग्जिस्ट करेंगी जो सबकॉर्टिकल ग्रे मैटर में. दैट मींस डिफरेंशियल वीकनेस भी होगी, सेंसरी लॉस भी होगा, यूएमएन टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व भी होगा. लेकिन इसके अलावा देयर हैज टू बी समथिंग दैट टेल यू दैट द कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्वड. नाउ व्हाट कैन दैट बी? सो दैट कैन बी इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, इसका मतलब कॉर्टिकल है. अगर आपने बोला कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब कुछ कॉर्टिकल है. इसका मतलब है कि अगर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कोई ना कोई कॉर्टिकल फंक्शन अफेक्टेड होना चाहिए. There's some tests which are called as special tests which are called as lobar function test. अंडरग्रेड लेवल पे हम नहीं पढ़ते उनको. तो जो लोबार फंक्शन टेस्ट होते हैं, अलग अलग लोब के फंक्शन देखे जाते हैं. तो जैसे कॉन्शियसनेस एक लोब का फंक्शन है, मेमोरी कंबाइंड फंक्शन है लोब्स का. तो ये सारी चीजें अगर लॉस हो जाए, इनमें से कुछ भी लॉस हो जाए, दैट मींस इट इज एन इंडिकेटर टुवर्ड्स कॉर्टेक्स. इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेडेक, that is again cortical involvement. If there is a loss of memory, if there is a loss of, if there is a अगर aphasia है,
एफेजिया का मतलब ये है कि आपका कॉर्टिकल सेंटर इन्वॉल्व हुआ कोई ना कोई. If there is any of these present along with differential weakness, there may be sensory loss, there may be human type of cranial nerve involvement. If this scenario is possible, if this is the, if any of this, if there is a differential weakness along with any of these, you can straightly label that as cortical involvement or a cortical stroke. If there is differential weakness with sensory loss, with or without sensory loss, with or without cranial nerve involvement, so these are possible. They may be present or may not be present. Again, it depends upon कि वो वाला cortex भी जो blood supply है, sensory cortex को वो involve हुई है नहीं हुई है. So it may or may not be involved. So if these may or may not be involved, but along with that there is only differential weakness and there are none of these signs, then you'll call it as a subcortical gray matter which is involved. Internal capsule, you have dense hemiplegia and you'll have sensory loss with human type of cranial nerve involvement. Again, these are all dense hemiplegia will occur in 90% of the chances. There may be chances of sensory loss as well, and there may be chances of human type of cranial nerve involvement as well. Okay, now come to thalamus. Okay, before we go to thalamus, brainstem is very easy because we know what will happen in the brainstem will be either there will be a brainstem syndrome or there will be crossed hemiplegia, and we already have talked about crossed hemiplegia. Remember, crossed hemiplegia is nothing but you have hemiplegia along with element type of cranial nerve involvement. That is, in cases of thalamus, what will happen? There may be differential weakness. There may be differential weakness. There may or may not be any sensory loss, or there may or may not be any sensory loss. What commonly will be present, or what is the decisive feature, which is the key feature in case of thalamic stroke, will be the patient will complain of burning pain. So if the thalamus is involved, there will be burning sensation. There will be burning pain. There will be history of hyperesthesia. Hyperesthesia means to perceive any sensory stimuli by more than its normal. So, for example, if I say this bottle, this water is cold, so you know when you touch, you say this is cold. But if a patient with a stroke in the thalamus, if he touches this bottle or this water, he'll say it is extremely cold. So the sensations are very, very bizarrely perceived, and they're perceived at their extremes. Similarly, what will happen in cases of hyperesthesia, the patient, if you give him a pin prick, he'll feel as if 100 pins have been pricked into him. So that means every sensory stimuli that comes to his body is amplified a lot of time. And we all know this will happen because thalamus is the head center of all sensory reception. See, any tract you think of, either it is the spinal thalamic tract, sorry, or a medial lemniscus pathway, they all will terminate directly into their either by the first order neuron, second order neuron into the thalamus. So the thalamus is receiving all the sensory input. Now, once the thalamus is involved, the stroke is at the level of the thalamus. The thalamus does not know what is right and what is wrong, and that is the reason why there will be hyperesthesia and burning pain sensations in a thalamic stroke. So this is a key feature that you should remember for a thalamic stroke. Again, a sensory loss is quite possible, and a human type of cranial nerve involvement is also possible. So this is localization of stroke or the clinical features of stroke within the neuraxis. This should be very, very crystal clear. Okay, so whatever we talked about so far, that is localization of the stroke on the basis of vascular territory, is good to get a distinction. It is good to understand for a patient. But this is very important to pass the clinical examination, to pass your practical examination. This is the most important thing in the entire gambit of stroke that you should remember. Any doubts in clinical features before we go to investigation and management? Okay, so what does dense in dense hemiplegia signify? And what is cortical manifestation? I'll repeat both of them. Fine. So what happens when we talk about cortical manifestation, there has to be some form of involvement of cortex. Now, cortex, cerebral cortex, basically means जितने भी areas हैं, named areas have. So every part of the cortex has got a specific function to do. What happens if the cortex is involved? That function will be lost.
That is how we identify whether this is whether this is a cortical stroke or a non-cortical stroke. So, for a cortical stroke to be present, there has to be a differential weakness, and apart from that, there will be any of the following features. These features may include headache, seizures, there may be loss of consciousness, loss of memory, there may be aphasia. Like in other things also, just you have to think which lobe is involved. So, for example, the frontal lobe is involved. There will be social inhibition. Sorry, there'll be social disinhibition. If the lateral lobe is involved, if the temporal lobe is involved, you'll have auditory hallucinations. If the occipital lobe is involved, there will be visual disturbances. So, if any of these is involved, then you know that this problem is more likely to be localized in the cortex, and it is not subcortical or it is non-cortical. That is how you differentiate between a cortical stroke and the rest. I hope I'm clear with this. Okay. The question about what is dense hemiplegia. Okay. So now what is dense hemiplegia? So if you go back to the books of anatomy and you try to look at the distribution of the internal capsule, you'll see कि जो cerebral cortex है उससे बहुत सारे fibers निकलते हैं और वो एक बहुत छोटी सी एरिया से पास करते हैं. इस एरिया को आप बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल. तो ये जो एरिया है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स पास हो रहे हैं, ये फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं. तो जब भी हम बोलते हैं कि डेंस हेमिप्लीजिया है, इसका मतलब इंटरनल कैप्सूल का हेमिप्लीजिया. और डेंस बोलने का मतलब है क्योंकि फाइबर्स इतने क्लोजली पैक्ड है तो सारे फाइबर्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं. एंड दैट इज द रीजन वाई जो आपका डेंस हेमिप्लीजिया में जो वीकनेस है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बराबर है. तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जो वीकनेस है वो बराबर है, उसी को बोलने के लिए दूसरा टर्म है डेंस हेमिप्लीजिया. और डेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं इंटरनल कैप्सूल में. तो डेंस हेमिप्लीजिया, इंटरनल कैप्सूल हेमिप्लीजिया आप बोल सकते हैं, या फिर इक्वल हेमिप्लीजिया बोल सकते हैं. ये तीनों सेम टर्म्स है. आकाश, इज दिस क्लियर? Okay. Any more doubts? Okay. We have finished with the clinical features. Now we'll go to investigation. ठीक है. तो बुक में क्या है कि एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको दी होंगी. I'll just talk about the important investigations and when to do those investigations and why to do those investigations. See, एग्जाम में you do not have lot of time. आपको पूरा आंसर फिनिश करना है तो आप सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं लिख सकते. So whatever are the important ones that should be in your mind, A, and B, you should know why you are doing that. So if you can list the investigation, that is very good. If you can tell the reasons along with it, that is excellent. So we'll talk about those. So first of all, investigation in case of a stroke. Whenever you talk about investigation of stroke, see, I would like to divide my investigation into two parts. One, I would like to first do emergency investigations. That is immediately as soon as the patient comes to me and I have suspected कि हाँ ठीक है इनको stroke हो सकता है, तो I'll do emergency investigation. That means ठक 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 ठक. This should be very clear in your mind कि मुझे ये 4 investigations करनी है और ये must है. उसके बाद I like to supportive investigations. So once my patient is stable or I know what I'm dealing with, then I can give him supportive investigations. Okay. Let's talk about emergency investigation. Remember, the first investigation for any patient who's brought in with signs and symptoms of stroke is a non-contrast CT scan of the brain. Preferably should be called the skull. NCCT skull, very, very, very important. Why? I'll tell you the reason why. See, you have two choices in imaging. Either you can do a CT or you can do an MRI. A CT takes 5 minutes to be done. An MRI will take at least 30 minutes to be done, up to 60 minutes. This is what an MRI will take. In CT, you have the option of giving contrast as well as you can give non-contrast. MRI, you'll have to give some kind of a contrast. There are a lot of contraindications to giving a contrast, but if you want to do a non-contrast CT, then there are no contraindications for that.
So you can immediately take your patient for a NCCT. Look for one thing. If it is there, you know what is to be done. If it is not there, you know what is to be done. So that means, given a choice between an NCCT and MRI, what would you like to do for a patient? I would like to do an NCCT first. Now, why are you doing an NCCT? Or why do because it is again taking less time, and there is only one aim: to rule out hemorrhage, nothing else. If see, once the patient comes to you, you want to know whether it is a hemorrhagic stroke or a thrombotic stroke. अगर थॉमस बना हुआ है, अगर एम्बोलस बना हुआ है, you can give the patient anticoagulant, you can break the thrombus, as simple as that. लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट को हीमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है, दैट मींस ही इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, उनका आईसीपी बहुत ज्यादा रेज्ड होगा, इस केस में अगर आप जाके थ्रोम्बोलाइज कर देते हो या फिर ब्लड को थिन कर देते हो, ब्लड पेशेंट को एंटीकोगुलेंट डाल देते हो, ऑलरेडी इज ब्लीडिंग, नाउ विल ब्लीड मोर. That is why we say it is very important to differentiate between a hemorrhagic stroke and a ischemic stroke, clinically and radiologically, because the management is different. Now see, the management is completely different. One, you're giving anticoagulant to the patient, other, the anticoagulant is strictly contraindicated. That is the difference. So very important. The first investigation that we do is an NCCT brain, and the reason is to rule out any hemorrhage first. Okay, so even Maro has mentioned a lot of findings. Like for अगर आप NCCT करते हैं तो first 6 hours में आपको कुछ नहीं मिलेगा. First 6 hours आपको कुछ नहीं मिलेगा. Up to 6 hours में आपको सिर्फ और सिर्फ एडिमा मिल सकता है, cerebral edema, and that will be seen as flattening of the sulci and gyri. Flattening of sulci and gyri. This is what Maro mentions. After 6 hours, you can see something called as insular ribbon sign. Insular ribbon sign, just for MCQs. Not that important. ये सब कुछ NCCT पे दिख रहा है आपको. After 24 hours, after 48 hours, you can actually see an infarcted area or infarction that has taken place. This is least important. This is just for MCQs or what. What is more important is to remember the first investigation that you like to do for a patient is an NCCT of the brain, of the skull, to rule out any hemorrhage, because hemorrhagic stroke is something that you want to rule out for the first thing. Once you've ruled out a hemorrhagic stroke, then depending upon the time at which the patient is brought, you can find these features. Again, these are not very important. The most important thing is to rule out hemorrhage. So that's the first investigation. The second investigation that you will blindly do is a blood sugar level. This is very, very, very important, because majority of your patients will be old age baba. Now the problem with them, they're brought in with unconsciousness. So if there's a patient who is unconscious, apart from stroke, the other differential, that is hypoglycemia. So hypoglycemic coma is one of the differentials. So if the patient has gone into hypoglycemia, there's nothing to do with anticoagulation therapy. Just give the patient give the patient dextrose and look at the way how he's improving. Therefore, you must rule out diabetic ketoacidosis can be one of the possibilities. So hyperglycemia as well as hypoglycemia. That is why you should do blood sugar level 1. Second, if the blood sugar levels are very high, thrombolysis is contraindicated. You cannot do thrombolysis. You have to control the blood sugar levels as well. Third, if the blood sugar levels are very, very high, there is also a possibility that the edema will worsen. You have to control the blood sugar level. So most importantly, why do you do a blood sugar level? Is to rule out other causes of stroke, which can be because of hypoglycemia or which can be because of hyperglycemia, other causes of unconsciousness. And the other reason is to control the blood sugar, preferably less than 300, so that you can thrombolize the patient. This is the second investigation that you do for the patient. The third investigation that you will do for a patient will be an ECG. Remember, embolic strokes, the commonest reason for embolic strokes was either it was a carotid artery stroke or a cardiogenic emboli. If it is a cardiogenic emboli, you can do an ECG, you can find it out. So if on an ECG, you find out there is an atrial fibrillation, you can treat that atrial fibrillation. So you must rule out the source of an emboli. And that is why even in that emergency scenario, you've done an NCCT, you collected the blood sample for a blood sugar level,
You'll put on an ECG lead and rule out is there any ongoing arrhythmia, especially atrial fibrillation is very, very, very important. The fourth investigation that you'll do after you've done all of these three is an MRI. I'll tell you what are the findings in an MRI. But given an option between a CT and MRI, you'll always do a CT first. Okay. The fourth investigation in line that we're talking about is an MRI. Now, MRI, there are various types of MRI which are available. Something called as a diffusion weighted MRI, a perfusion weighted MRI. So there are lots of types of MRI that are available. Preferably, what would you like to do? You would like to do a perfusion weighted MRI because you want to look which are the areas which are less perfused. So if you can see that less perfused area, you'll know that this is the area that is ischemic. So we're doing an MRI. Preferably, we are doing a perfusion weighted MRI. Perfusion weighted MRI. The reason for doing a perfusion weighted MRI is to identify ischemic area. To identify ischemic area. तो अगर आपने इश्चिमिक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपको दिख रहा है तो बेसिकली आपको एक डार्क इन्फाक्टेड एरिया दिखेगा, उसके साइड में आपको एक लाइट इश्चिमिक एरिया दिखेगा, which is umbra and penumbra. मैंने बात की थी पहले भी इसकी, umbra and penumbra. तो penumbra is your ischemic area. अगर आपको ischemic area दिख रहा है, that means it is a salvageable tissue. You can protect this tissue. If you can thrombolize the patient, you can protect this. Umbra, you cannot protect this. This is already infarcted. So if you find that there is penumbra, there is an ischemic area that is present, you can still go and thrombolize the patient, and you can protect that the remaining tissue, that ischemic area which is there, that can be protected. This is salvageable area. That is why you're doing a perfusion weighted MRI. The other investigation which you can do is a CT angiogram or an MRI angiogram. So you'll give the contrast to the patient, and you'll see, and you'll follow it in. You'll give an intravenous contrast, and then you will follow कि जो इसका जो फ्लो है वो ब्रेन में कौन कौन सी वेसल्स में है. जो भी वेसल ऑक्लूडेड होगी उसमें फ्लो नहीं होगा. So you'll be able to identify the site of occlusion. Again, very important. I'll tell you why. So, what are the investigations that you'd like to do in an emergency setting when the patient first presents to you? The first will be an NCCT brain to rule out any hemorrhage. The next investigation will be a blood sugar level to rule out other causes of consciousness. Next will be an ECG to rule out ongoing arrhythmias, especially atrial fibrillation. And the fourth will be an MRI, perfusion weighted MRI to look for ischemic area. The fifth investigation will be a CT or an MR angiogram and to look for site of occlusion, site of vessel occlusion, occlusion of vessel. So whether it is the ACA, MCA or the PCA, which branch is involved, that can be identified with this. Once you've done all of this, this will help you in managing your patient immediately from stroke. For supportive investigations, there are two investigations that you should do. One is called lipid profile. So lipid profile will tell you how bad is the atherosclerosis in that patient and how promptly you need to treat them with statins. You need to control his cholesterol levels. So this is to control cholesterol levels or to keep a check on the atherosclerosis. The other investigation that you should do is a Doppler, is a carotid Doppler. Now, wherever you see the word Doppler, it just means an MRI. Sorry, it just means an USG. So Doppler means the USG, and when you do if you do a USG of a vessel, it is called Doppler. So if you have to do a carotid Doppler, the carotid Doppler, what you see, इसकी जो carotid wall है, उसमें blood का flow कितना है, and if the flow is occluded by 70%, मतलब 70% of the flow is occluded by 70% or more. In that case, you will offer your patient either a stenting. So a stent should be placed in the carotid ताकि carotid को हम खोल सकें. तो carotid बहुत ज़्यादा occlude हो चुकी है, उसका blood flow जो है वो 70% से ज़्यादा compromise हो चुका है. In that case, you would like to put a stent and open the carotid, or you would like to go
via surgical device, and then remove the thrombus. So you would like to do a thrombectomy for that patient. Thrombectomy, thrombectomy, or an atherectomy. When you read peripheral vascular diseases in surgery, you'll be more familiar with these terms. But for now, just remember, you'll do a carotid Doppler if the vessel is occluded by 70% or more. 70% or more. You like to do stenting for the patient or a thrombectomy. This is in total all the investigations that you need. So primary management, you need more importantly just four investigations. That is an NCCT, a blood sugar level, ECG, and an MRI. MRI or perfusion weighted MRI. Others you can still take later. And the supportive investigation after the stabilization of the patient, giving him the initial treatment. You can do supportive investigations later on. That is after maybe after 48 hours. So after the admission, you can do a lipid profile to look for how bad is the atherosclerosis and how promptly it needs to be controlled, and a carotid Doppler. So these are the gambit of investigation that you need to do. Again, I'm telling you, there's a whole lot of investigations. Okay. Okay. So weighted क्या होता है? So see, what happens is कि MRI में there are different things that you can see. So according to what is the primary substrate which you're looking at. So for example, you can look at a diffusion weighted MRI. That will show you कि how is the diffusion taking place across the brain. So that will give you an idea of which is the normal brain and which is an abnormal brain. It does not tell you a lot. It does not give you a very. It gives you a very little information. That is why we don't do it in first line in case of a stroke. Perfusion weighted MRI means we want to look for perfusion status. So weighted means what you are looking at. If you're looking at the perfusion status of the brain, it will be perfusion weighted MRI. If you're looking at the diffusion status of the brain, how is the substrate getting diffused in the brain, you look at a diffusion weighted MRI. Nanchu, that is the answer for your question. Okay. Danish, the question is, but none of CT, sugar, or ECG are assuring the diagnosis of stroke. See, stroke is a clinical diagnosis. If you look at the patient, you know that there is weakness. Okay, you'll be able to tell that this patient has got stroke. The idea of carrying out investigations is to look and find out a treatable etiology. It is always and always investigation to look for a treatable etiology and to rule out a hemorrhagic stroke. It is very important कि hemorrhage present है कि नहीं है. So the idea of doing investigation is not to confirm the diagnosis of stroke. Obviously, it is to confirm कि stroke 100% present है या नहीं है. Obviously, because you cannot do an intervention unless and until you have a proof for that. That is first thing first. Apart from that, you need to differentiate what kind of a stroke it is. That is the reason, and you have to look for any possible etiology. So if you know that there is an ongoing atrial fibrillation, you can control the atrial fibrillation and you can treat the stroke at the same time. So the amount of infarction that has been caused or that may be caused will be reduced. That is the sole purpose of doing an investigation. Remember, in surgery also we always divide investigation into three parts. First, it is to confirm the diagnosis. Other, it is to stage the disease, and third is a pre-op workup. Similarly, here also there are three things. First is to confirm the diagnosis. Other is to stage or classify the disease, what kind of a stroke it is, and third, it is a pre-op workup, or you can say to look for the etiologies or a pre-treatment workup. This is so to treat the cause, you need to know what the cause is, and that is why we're doing this investigation. So we are on because stroke will tell, so in the presence of a clinical setting, these clinical features are present and there is no signs of any hemorrhage. So I know that this is most likely to be an ischemic stroke, and that is how I'll treat stroke. There can be different, there can be n number of possibilities of an unconscious patient. How will I know? But the relatives are giving me a history. There is a history of seizure. They give me a history that there was weakness and then they become unconscious. So now I know that this is falling into more of a stroke and less of a seizure episode per se, less of a meningitis per se. If there was a history of, say, if there was a previous history of fever, projectile vomiting, then I could have thought ki, haan, hai, this could more be of meningitis. So that is why it is not always that the investigation will confirm your diagnosis, but it will support your diagnosis. And since you need to do an intervention for that, see,
Out of the three things, a stroke, a meningitis, and hypoglycemia, the patient is most likely to die because of stroke, then because of hypoglycemia, and then because of meningitis. So always look and treat for the most deadliest first, and that is the reason and the most reversible part. So all of these three are reversible. But the most deadliest one will be a stroke, and that is why you need to confirm that this is stroke and nothing else, and that is the reason for the investigation. And hope I've answered your question. Okay, so we will diagnose clinically, carry out investigations to rule out easily picked obvious causes, and will change treatment modalities. Exactly. This always happens in medicine. So you think of so for example, I'll tell you, like for example, memory loss. Just think of a scenario of memory loss. So memory loss can be because of n number of reasons, or ataxia can be because of n number of reasons. So because in these cases, 50% of the causes are non-treatable causes, like a Prine's disease, a corticobacillar degeneration, a Huntington's chorea. You cannot do much about this. But then you still do out a panel to look for drugs. You do an MRI to look for, is there any signs of inflammation, is there any ongoing ischemia, is there any sorts of ongoing infection. The reason to do these investigations in medicine is to look for a treatable cause. So it is always and always that you have five differentials. You put up your differentials in an order such that the reversible ones comes at the top, and the least treatable comes at the lowermost, and the most lethal should come at the top. And that is why we'll first like to rule out that stroke is not present in this patient, and that is the reason why we are doing and why we are taking a proper history. Along with that, we're doing this investigation. Manish, hope I've answered your question. Any more questions? Beautiful questions. Okay. So you can keep typing your questions. You can text me your questions. We'll take those questions as well. Now we'll go to the last part of the class, and that will be the management of stroke. Okay. So management of stroke can be divided into n number of parts. So we're talking about ischemic stroke and ischemic stroke only, first of all. So first, in any stroke, that you need to do is to give the patient a general treatment. So if you talk about the treatment part, I'm talking about treatment. Treatment, first I'd like to give general treatment. Then I'd like to give my patient supportive treatment. And then I'd like to give my patient definitive treatment. Definitive treatment. Now remember, when we talk about general treatment, now general treatment will consist of A, B, C, D, that we always love to write. A is for airway, P is for breathing, C is for circulation. ABC is very important. Now we always have a habit of writing airway, breathing, and circulation, but we don't know what this exactly means. So now please make a note of this. Airway means to keep the airway clear and patent. That means you need to make sure that the airway is clear as well as patent, so there are no secretions there. For this, you'll do two things. You'll do a suctioning, and to secure the airway, you'll do an endotracheal intubation. So how will you protect the airway? You'll do an endotracheal intubation. How will you clear the secretions? You'll do a suctioning. When we talk about breathing, breathing is to ensure that the SpO2 is more than 90%. Is more than 90% the SpO2. That is your aim. You need to give the patient oxygenation. If the SpO2 is less than 90%, and your aim is to bring the SpO2 more than 90%. Circulation is to ensure that there is no signs of shock. That means there is no tachycardia, there is no hypotension, there is no cold calamity extremities. The urine output is normal. That is more than 0.5 ml per kg per hour. So if you make sure that these things are done, that means you have controlled airway, breathing, and circulation. So never in your answer just write airway, breathing, and circulation. Just write 2 to 2 words for each. Airway, I'll protect the airway by an endotracheal intubation. I'll clear secretions by suctioning. Breathing, give oxygenation if SpO2 less than 90%, target SpO2 more than 90%. Circulation, improve, prevent hypotension,
improve, prevent hypotension, prevent shock. That is it. This is very important. The next important thing that you should keep in mind is to correct hypo or hyperglycemia. Hypo or hyperglycemia. Always correct hypoglycemia first, because this may worsen the stroke. Next important thing is to control body temperature. If the patient develops fever, now fever is a hypermetabolic state, so it will lead to early depletion of glucose. And we know that neurons are totally dependent on glucose. They do not have any glycogen. They do not have any glucose reserves. अगर body में glucose खत्म, they'll start getting ischemic and infarcted. That is why always control temperature, and especially fever. So these are general measures that you must take care of. Supportive measures. There are three important things in supportive measures that you need to do. First, control BP, control blood pressure. Now, this is a very, very tricky situation. What happens when there is a stroke? Because of the reflexes in the brain, there will be reactionary hypertension. Please remember this term, reactionary hypertension. तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. बीपी 300 by 140, 160 हो सकता है. Your aim is to control the blood pressure. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आपके पास में कोई डेफिनेटली ट्रीटमेंट देने की फैसिलिटी नहीं है वहां पे, then your aim should be to just control the BP and keep it at the level of 220 by 110. इश्यूमिक स्ट्रोक में अगर ब्लड प्रेशर इतना है, दैट मीन्स कि ब्रेन को सर्कुलेशन, जो ब्रेन है उसको परफ्यूजन मिल रहा है. This is reactionary hypertension that has to be controlled to this level, and this will permit brain perfusion. Brain perfusion. The brain is getting perfused. That means अगर ब्लड प्रेशर इतना है तो इससे कम ब्लड प्रेशर नहीं करना है. पहली बात, अगर आपके पास डेफिनेटिव थेरेपी नहीं है तो पहली चीज. दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर को सडनली कम नहीं करना है. नो सडन डिक्रीज. सडन डिक्रीज इज टू बी अवॉइडेड. ऐसा नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का 300 था तो मुझे 5 मिनट में 220 करना है. नहीं, there should be no sudden decrease in blood pressure. There should be a very gradual decrease in blood pressure if you want to bring it to normal even. Third important thing, if you have the facility of a definitive therapy, then your target should be 185 by 105. This is your target. This is 120. This is 110. This is your target. If and if only you have availability of definitive therapy, that means you can thrombolize the patient or you can do an endovascular procedure if definitive therapy is present. तभी करना है. बीबी में 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. सबसे पहली चीज कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है. दैट मींस दैट देयर इज रिएक्शनरी हाइपरटेंशन दैट मे अकर. व्हाट यू वांट योर पेशेंट is to maintain a BP of about 220 to 120. That will permit brain perfusion. So the brain perfusion is maintained. At the same time, now you can shift your patient. If you have the availability of a definitive therapy, then you should reduce his blood pressure to 185 by 110 mmHg. But remember, there should be no sudden decrease in blood pressure. So it should be a very gradual decrease, a slow decrease in blood pressure. What is the preferred agent to control BP? It is always and always your favorite. IV beta blockers like esmolol, very very good agent. Short acting, half life of 15 minutes. It could be labetalol, beautiful agent, 10 milligram, 10 every 10 minutes. These are very very good agents. That is the first thing that you must do, is to control blood pressure. Just a minute. All right. The first things first to check is to first thing in a supportive therapy is to control the blood pressure. The next thing that you should do is anti-edema measures. That means measures to take to reduce edema. तो edema कम करना है, तो anti-edema measures. Anti-edema. So how will you reduce edema? So for that, the first thing that you should do is head tilt.
It is a conservative method, head tilt of 30 degrees. So if you tilt the head by 30 degrees to a patient, that helps to reduce the edema, that helps to reduce intracranial pressure. So just this is the normal neutral position, head tilt of 30 degrees. That's it. Second, it is fluid restriction. You have to give your fluids very, very carefully. You know that this patient has got hypertension or hypotension. You are monitoring his urine output. At the same time, you have to restrict the fluid. Don't give too much fluid. That may result in cerebral edema. So fluid restriction. And once you find that there is already edema setting in, you can give your favorite mannitol. And by now, you all know that the dose of IV mannitol is 1 gram per kg. That's 1 milligram per kg. You can give mannitol is gram. Sorry. So you can give IV mannitol 1 gram per kg. Preferably, it should be given at a low dose of 0.25 gram per kg. But it can be given up to 1 gram per kg. That is mannitol. So this will reduce your edema. This is your second supportive measure. Why do you want to prevent edema? Remember the cycle, that pathophysiology cycle. So edema will cause secondary damage. So you are protecting two things. First, we are preventing two things. First, you are protecting secondary damage. So you are preventing secondary damage. And also you are protecting the ischemic area. You're protecting the ischemic area. That is the reason why you're going for an anti-edema measure. The third is to give anticoagulant. So now currently there are two types of anticoagulant that you should give to the patient. First is aspirin plus clopid. These are antiplatelets. Clopid. These are antiplatelets. Remember, these are antiplatelets. Have got a better role in. They have got a more important role in terms of arterial stroke, arterial thrombosis. And you know that aspirin and clopid, they are antiplatelet agents. Arterial thrombosis are rich in platelets, and therefore they should be given. Apart from this, you should give your patient lower molecular weight heparin as well. The reason to give lower molecular weight heparin is key. Their chances of paroxysmal stroke, since all patients with stroke will be bed bound, so they'll remain bed bound for a long period of time. Their chances of DVT and their chances of embolism again. For that, you need to give your patient low molecular weight heparin. Remember, the dose is very simple. My favorite is enoxaparin. 1 milligram per kg. Subcutaneous. OD for prophylaxis. BD for therapeutic. So if there's an underlying DVT you want to treat, you give it BD. If you want to prevent it, you give it OD. That is, aspirin is to be given 75 milligram. Clopid is to be given 300 milligram. So remember, these should be given. Why are we giving anticoagulant? There are two important things. The first important thing is it limits the size of the infarct. It limits the size of infarct. It will not increase the size of the infarct. That means it is doing the same function. It is protecting the ischemic area. The other function, or the more important function that it is doing, is it is for the secondary prevention of stroke. Remember, all patients who had stroke will be on antiplatelets for at least 1 year. This is a secondary prevention for stroke. This is all you're talking about an ischemic stroke. This is all that you need to do in your supportive measures. So till now, what we have done, we have offered the patient some general measures, that is air breathing circulation, control of temperature, control of temperature, control of blood sugar level. Then we've done anti-edema. Then we've given him supportive measures in the form of control of blood pressure, anti-edema measures, and anticoagulation. Now we come to the definitive therapy. If you have any doubts in between, you can just
keep on typing them in the chat box. I'll answer them one by one. Now we come to the definitive treatment. Okay, those who are not writing, please make a note of this. Definitive जो अभी हम definitive treatment की बात कर रहे हैं, this is as per the new guidelines. The change of the guidelines. The Harrison's 20th edition also does not mention it in the same way. First things first, and it is not given in one book. So there will always be confusion कि क्या करना है. उसके लिए definitive management के लिए just refer back to your notes. Now remember, what is the definitive management? आपका दो पॉसिबिलिटी है. या तो आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर सकते हो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक इंट्रावीनस जो आपके पास में थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करने का एजेंट दे सकते हो. Either you can thrombolize your patient or you can do an endovascular procedure. एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी वेसल इन्वॉल्व थी. आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से जाएंगे. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू आप जाते हैं. आप वेसल के अंदर जाएंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे उस वेसल को, उस वेसल के एग्जैक्ट साइड पे पहुंचेंगे जहां पे वो वेसल ऑक्लूडेड है. उसके बाद आप उस थ्रोम्बस को ब्रेक करेंगे और पूरा का पूरा रिमूव करेंगे. वहां जाके आप एक स्टेंट डालेंगे और उसको वेसल को खोल देंगे. जो वेसल ऑक्लूडेड है उस वेसल को आप खोल देंगे. ये सब कुछ आप कर सकते हैं एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर के थ्रू. लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है. खुद की लिमिटेशन ये है कि क्योंकि वेसल्स जो है वो डिवाइड होती रहती हैं, वो और पतली होती जाती रहती हैं, तो एक बहुत ही लिमिटेड वेसल डायमीटर तक ही जा सकते हैं आप इससे. दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करेगी. तो आप सिर्फ फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तक जा सकते हैं. एसीए की फर्स्ट ब्रांच तक ही जा सकते हैं. उसके आगे जाने के लिए द वायर हैज टू बी वेरी वेरी थिन. वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइड वायर और द कैथेटर वायर दैट गोज इनसाइड the vessel. So that has to be very thin. So it is not possible. Therefore, it can only be done for major vessel occlusion. Remember, can only be done for major vessel occlusion. For major vessel occlusion. पहली बात तो ये हो गई. तो यही इसका लिमिटेशन है कि मेजर वेसल ऑक्लूजन कर सकते हैं आप. थ्रोम्बोलाइसिस का भी एक लिमिटेशन है. उसका लिमिटेशन ये, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेजर हेड सर्जरी, हेड इंजरी हुई है लास्ट 14 डेज में, कोई अगर हेड इंजरी हुई है, अगर लास्ट 2 मंथ्स में कोई मेजर न्यूरो सर्जरी हुई है, कोई न्यूरो सर्जरी हुई हो लास्ट 2 मंथ्स में, पेशेंट एंटी कोआगुलेंट पे है, अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डायस्थेसिस है, पहले से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को, हीमोफीलिया है पेशेंट को, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर बीपी बहुत ज्यादा है, बीपी कंट्रोल नहीं है, इट इज मोर देन 185/110, ये सभी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते. तो ये सब अपने अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है थ्रोम्बोलिसिस के. इसमें क्या करते हैं, जो प्रेफर्ड एजेंट है दैट इज, मैं बता देता हूँ, ये हर जगह सेम डोज मिलेगा आपको. एल्टीप्लेज, दिस इज द एजेंट दैट हैव टू यूज. 0.9 मिलीग्राम पर केजी, ये टोटल डोज है एल्टीप्लेज का. तो आपने एल्टीप्लेज की वाइल ली, आपने 0.9 मिलीग्राम पर एजी इस हिसाब से डोज कैलकुलेट किया. इसका आपको 10% आईवी बोलस देना है और रेस्ट 90% आईवी इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर देना है. आईवी इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर. तो आपके पास दो ऑप्शन है डेफिनेटिव में. एक है थ्रोम्बोलिसिस, एक है एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर, दैट इज मेजर वेसल ऑक्लूजन को आपको ये जाके थ्रोम्बस को ब्रेक करना है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हेल्प से. अपनी अपनी लिमिटेशन है दोनों की, अपने अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों के लिए. मोर इंपॉर्टेंट है आपने एलटीप्लेज याद रखना है. द डोज है दैट इज 0.9 मिलीग्राम पर एजी. 10% यू हैव टू गिव आईवी बोलस एंड 90% आईवी इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर. ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा अब जो हेडिंग हम डालेंगे वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिसे हम बोलते हैं, जो दो नए कॉन्सेप्ट आए हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक. वन इज कॉल्ड द टाइम कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड द टिश्यू कॉन्सेप्ट. ओके, वेरी वेरी इजी, समझने की कोशिश करेंगे. समझते हैं टाइम कॉन्सेप्ट क्या है. टाइम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर पेशेंट का ऑनसेट से लेके जो प्रेजेंटेशन है, स्ट्रोक का प्रेजेंटेशन है, दैट इज विद इन 4.5 आवर्स, तो आप समराइज कर सकते हैं. अगर पेशेंट ने आपको फर्स्ट प्रेजेंट किया, पेशेंट को स्ट्रोक का ऑनसेट हुआ था, पेशेंट आपको प्रेजेंट किया है
और इफ ही इज प्रेजेंटेड विद इन 4.5 आवर्स, तो आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं. इफ इट इज मोर देन 4.5 आवर्स, देन इट इज वेरी डाउटफुल कि उसको थ्रोम्बोलाइज करना है या नहीं करना है. पहली बात. ऐसे ही एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर के लिए अब विद इन 6 आवर्स है. तो विद इन 6 आवर्स तक में अगर पेशेंट प्रेजेंट करके आपके पास में, और आपको पता है कि आपके आपके पास फैसिलिटी है इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में, तो आप एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर कर सकते हैं. रिमेंबर, हम जब भी बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आया मेरे हॉस्पिटल में, मेरे पास दोनों चीजें हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी है और थ्रोम्बोलिसिस भी है. तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑब्वियसली एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करूंगा. अगर मेरे पास एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ थ्रोम्बोलिसिस है, पेशेंट 4.5 आवर्स के अंदर आया मेरे पास में, मैं थ्रोम्बोलाइज कर लूंगा. अगर पेशेंट 6 आवर्स के अंदर में आया है, दोनों चीजें मेरे पास में है, या फिर सिर्फ एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर है, मैं सिर्फ एक कैथ लैब हूँ, मेरे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, विद इन 6 आवर्स में आया है, तो मैं एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर कर सकता हूँ. आफ्टर 6 आवर्स के बाद अगर आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट देना है, और आपको जनरल मैनेजमेंट देना है. फिर आप थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते, आप एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर नहीं दे सकते आप. ये बात. इसके अलावा ऐसा क्यों टाइम लिमिट क्यों डिसाइड किया गया? उन्होंने ये बोला कि इसके बाद है, अगर थ्रोम्बस इतने इतनी देर रह चुका है, तो इसके बाद वो सेटल हो चुका होगा, और या तो कोलैटरल्स अपने आप डेवलप हो जाने चाहिए थे, या फिर वो थ्रोम्बस बहुत हार्ड हो चुका है, तो आप इनमें से किसी भी चीज से नहीं तोड़ सकते. दैट इज एज सिंपल एज एक्सप्लेनेशन इज, थ्रोम्बस हैज एज्ड, thrombus is either set in completely or the collaterals must have developed. There is no benefit of giving any of this to the patient, and there are more chances of morbidity to the patient because of the operative procedure. लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया टिश्यू कॉन्सेप्ट. ये थ्रोम्बोलिसिस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर के लिए है. इन्होंने बोला कि अप टू 24 आवर्स, मान लो 6 आवर्स के बाद आया है, तो फ्रॉम 6 टू 24 आवर्स फ्रॉम ऑनसेट, आप एक एमआरआई करो, परफ्यूजन वेटेड एमआरआई करो. और अगर परफ्यूजन वेटेड एमआरआई में आपने ये प्रूव कर दिया कि हाँ उस परफ्यूजन वेटेड एमआरआई में कोई इश्यूमिक एरिया है, कोई पेनम्बरा है, तो फिर आप थ्रोम्बोलाइज कर सकते हो. तो ये जो थ्रोम्बोलिसिस है, मतलब टिश्यू कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर एमआरआई पे आपको टिश्यू मिलता है जो सैल्वेजेबल है, तो फिर आपको एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करना है. दैट इज अप टू 24 लेवल्स, अप टू 24 आवर्स. यही है. अगर परफ्यूजन एमआरआई पे आपको टिश्यू सैल्वेजेबल मिल रहा है, देन डू एन एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर, एज सिंपल एज दैट. एक बार फिर से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ आपके लिए. आपके पास डेफिनेटिव ऑप्शन में दो ही चीजें हैं, या तो आप थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं या फिर एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर कर सकते हैं. अगर आपके पास फैसिलिटी है एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर की, और पेशेंट 6 आवर्स से कम में आया है आपके पास में, आप एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करेंगे. अगर पेशेंट 4.5 आवर्स से कम में आया है आपके पास में, आपके पास एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर नहीं है, आप थ्रोम्बोलाइज करेंगे. अगर पेशेंट मोर देन 6 आवर्स के बाद आया है आपके पास में, और आपके पास में कोई भी फैसिलिटी नहीं, थ्रोम्बोलाइसिस की फैसिलिटी है पर एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर की फैसिलिटी थी नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, आप सपोर्टिव मेजर देंगे, आप जनरल मेजर्स देंगे. एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, फिर टिश्यू कॉन्सेप्ट आया जो ये बोलता है कि अगर आपके पास पेशेंट मोर देन 6 आवर्स के बाद भी आया है आपके पास, तो आप एक परफ्यूजन रिलेटेड एमआरआई करके देखो, और उस पे अगर आपको सैल्वेजेबल टिश्यू मिलता है, इश्यूमिक पेनम्बरा मिलता है, तो आप एक एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर अब भी कर सकते हैं. याद रखेंगे, एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर के लिए सिर्फ एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ मेजर वेसल्स के लिए हो सकता है. जो फाइनल वेसल्स होती हैं उनके लिए आप नहीं कर सकते. आप दिस कंप्लीट्स योर मैनेजमेंट ऑफ इश्यूमिक स्ट्रोक. एनी डाउट सो फार? Okay, GTN has got no role in cases of neurology. That is, GTN is very good when you look for cardiology, but it has got no role in neurology as of now. Any more questions on management of stroke? This is very, very, very important. This has come new. ज्यादा लोगों को पता नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर्स भी बोलेंगे हैं, but then this is the latest. This should be known to all of you. इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से मैनेजमेंट अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा. Okay, so we are done with stroke now, almost there. Now the last part of this discussion of stroke जो है some unusual things जो मैं बता देता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जांपल है हीमोरेजिक स्ट्रोक. तो हीमोरेजिक स्ट्रोक अगेन बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन हो सकता है. अनकॉमन इन एग्जाम में आना अनकॉमन है, थ्योरी एग्जाम में पेशेंट को मिल ही सकता है. तो हीमोरेजिक स्ट्रोक में कुछ चीजें याद रखनी होती है आपको. तो सबसे पहली चीज होती है, वो पूछेंगे आपसे व्हाट आर द कॉमन साइट्स फॉर हेमोरेजिक स्ट्रोक.
कॉमन साइट्स तो पूछेंगे अगर आपका पेशेंट को हिमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो कॉमन साइट्स में वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोलूंगा मैं, सबसे कॉमनेस्ट जो है दैट विल बी पुटामेन, कॉर्डेट न्यूक्लियस, बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया, पॉन्स, सेरिबेलम। इसी ऑर्डर में याद करना है, ये कॉमन साइट्स है होने के स्ट्रोक, ठीक है। और ये जो कॉमन साइट्स हैं ऑफ, ओके, देयर आर कॉजेज ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक आल्सो। जैसे हमने बोला इसमें हम हेमोरेजिक स्ट्रोक क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू में हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। जो हाइपरटेंशन की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें ये कॉमन साइट्स होते हैं। अदर कैन बी अ लोबार हेमोरेजिक स्ट्रोक, मतलब एक पूरे लोब में स्ट्रोक हो सकता है। एंड थर्ड इट कुड बी अ रप्चर स्ट्रोक, रप्चर हेमोरेज। अब लोबार का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लोब के अंदर में हुआ है। दिस इज कॉमनली सीन व्हेन यू हैव एवी malformations, एवी malformation, एंड फॉर दोज पेशेंट्स ऑन एंटीकोगुलेंट, जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेंट ले रहे होते हैं, पेशेंट्स ऑन एंटीकोगुलेंट, जब एंटीकोगुलेंट कंट्रोल नहीं होता है, उसका ओवरडोज हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, दैट कैन लीड टू स्ट्रोक, दैट विल लीड टू अ लोबार स्ट्रोक फॉर्मेशन। ट्रॉमा कैन लीड टू अ लोबार स्ट्रोक फॉर्मेशन। रप्चर में क्या होता है, रप्चर में रप्चर ऑफ एनेरिज्म्स, कॉमनली दी बेरी एनेरिज्म, aneurysm, like the berry aneurysm. So these are the causes of hemorrhagic stroke. It can be an hypertensive hemorrhagic stroke, it could be a lobar hemorrhagic stroke, it could be a rupture hemorrhagic stroke. अगर रप्चर होगा तो रप्चर ऑफ एनेरिज्म होगा, कॉमनली विल बी द बेरी एनेरिज्म। लोबार में आपका एवी मैल्फॉर्मेशन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, और जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट है उसमें एक प्रॉपर लोब होगा, उस पूरे लोब के अंदर में ब्लीडिंग होगी, जो ब्लड का कम अक्यूमुलेशन होगा। और अगर हम बात करते हैं हीमरेज की, तो हीमरेज विल कॉमनली इन्वॉल्व दीज फॉलोइंग साइट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको पता होना चाहिए हीमरेजिक स्ट्रोक के बारे में, व्हाट आर द कॉजेस, एंड सेकंड थिंग द मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले इनका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अर्जेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को, अर्जेंटली आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो ब्लीड करते जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या है, दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इडीमा, क्योंकि सेरेब्रल इडीमा सर्टिन होने लगेगा, जो ब्लड वेसल, जो ब्लड बाहर आया है, दैट विल कॉज प्रेशर ऑफ द ब्रेन, तो आपको उसको रिलीव करना है, तो आपको इडीमा रिड्यूस करना है। तो आप सारी चीजें करोगे एंटी इडीमा के लिए, वो तो है ही, उसके अलावा आपको सर्जरी करनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे पहले जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा उसमें सर्जरी की कहाँ जरूरत थी, यहाँ सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको करना पड़ेगा डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी, क्रेनिएक्टमी, डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी करना पड़ेगा आपको, क्रेनिएक्टमी, क्रेनिएक्टमी बोलो क्रेनियोटमी बोलो, ठीक है, क्रेनिएक्टमी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपने देखा कि जैसे पेशेंट हैं, उन जो पेशेंट एंटी कोआगुलेंट पे थे वो ब्लीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो कोआगुलेट, जो एंटी कोआगुलेशन है वो ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे पेशेंट्स को आपको कोआगुलेंट देने पड़ेंगे। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना पड़ेगा आपको, प्लाज्मा, एफएफपी देना पड़ेगा आपको उन पेशेंट्स के लिए जो एंटी कोआगुलेंट्स पे थे, एंटी कोआगुलेंट पे जो पेशेंट है उनके लिए। उसके अलावा तो आपने बोला ये करना है। फिर डेफिनेटिव क्या है, डेफिनेटिव में अगर एनेरिज्म था, तो एनेरिज्म में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओपन सर्जरी कर सकते हैं, ओपन सर्जरी में जाके आप क्लिप लगा देते हैं, इसे बोलते हैं हम क्लिपिंग, तो क्लिपिंग ऑफ द एनेरिज्म बोलते हैं हम लोग। या फिर आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से जा सकते हैं, मतलब एंडोवास्कुलर प्रोसीजर कर सकते हैं बेसिकली, जिसमें आप जाके एनेरिज्म के अंदर कॉइलिंग कर सकते हैं, कॉइलिंग, कॉइलिंग ऑफ एनेरिज्म बोलते हैं उसको। तो ये आप एनेरिज्म्स के लिए कर सकते हैं। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक, ये पूरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में, जानना काफी है। अगर एक बार इसको भी अच्छे से देख लें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, ओके, अनुरीत ने पूछा है जनरल मैनेजमेंट में सर्कुलेशन, ठीक। अनुरीत, जनरल मैनेजमेंट में सर्कुलेशन क्या है कि देख, आपके पास में हाइपोटेंशन हो सकता है, आपके पास में हाइपर टेंशन हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके पास में। इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को स्ट्रोक, जब जब पेशेंट है, पेशेंट को किसी भी तरह से सेप्सिस में नहीं जाना है। इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर द साइंस ऑफ सेप्सिस बेसिकली,
या शॉक बेसिकली मर रहे हैं, तो पेशेंट को शॉक में नहीं जाना है। उसका मतलब क्या क्या है? उसका मतलब है पेशेंट को टेकिकार्डिया नहीं होना चाहिए। साइंस ऑफ शॉक में आता है उसमें टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज, वीक थ्रेडी पल्स, reduced urine output, that means urine output less than 0.5 ml per kg per hour। तो इनमें से कुछ भी है अगर, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो वर्स हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट शॉक में जा रहा है। तो आपको देखना है कि पेशेंट शॉक में नहीं जाना चाहिए। उसका जो वेंटिलेशन, उसका जो सर्कुलेशन है वो एडिक्वेट मेंटेन होना चाहिए। बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सभी परफ्यूज होने चाहिए। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बेसिक सी बात है, वो सिंपल सी बात है। अगर ब्रेन इश्यमिक हो गया है तो सारा जो ब्रेन बॉडी का रिस्पॉन्स है वो ऐसे होगा कि जो ब्रेन है उस तक ब्लड फ्लो बढ़ा दो। ऐसे में जो अदर ऑर्गन्स है उनका ब्लड, उनका जो परफ्यूजन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट शॉक में ना चला जाए। इसके लिए आप प्रिवेंट करें शॉक को, इसके लिए आप आईवी फ्लूइड दें पेशेंट को। लेकिन आपको याद रखना है कि आईवी फ्लूइड से एडिमा हो सकता है, तो मुझे चेकआउट करते रहना है कि पेशेंट को एडिमा नहीं होना चाहिए, पहली बात सेरेब्रल एडिमा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सेम टाइम आईवी फ्लूइड से मुझे मेंटेन करना है कि हाँ जो पेशेंट का परफ्यूजन है वो अच्छा है कि नहीं। उसके लिए आपका बेस्ट इंडिकेटर है आपका यूरिन आउटपुट। इसलिए इमीडिएटली कैथराइज द पेशेंट। ऑल स्ट्रोक पेशेंट आर कैथराइज्ड, इमीडिएटली कैथराइज्ड, बिना कुछ सोचे समझे। ऊपर आंसर क्वेश्चन। ये हेमोरेजिक स्ट्रोक इन टोटल है, हमने हेमोरेजिक स्ट्रोक भी कंप्लीट कर लिया है ये सर। ओके, इसके बाद जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे अनस्टैट टॉपिक्स इन स्ट्रोक। आई रिपीट, अनस्टैट टॉपिक्स इन स्ट्रोक। एग्जामिनर्स अगर ये पूछते हैं आपसे या आप बताते हैं एग्जामिनर को तो वो अत्यधिक खुश हो जाएंगे। अनस्टैट टॉपिक्स इन स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, दो ही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अगर आप याद करें तो मैं आपको बताया था कि जो आपके पास में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है उसका एक स्टेम होता है, उसका एक M1 पार्ट होता है, एक M2 पार्ट होता है, जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, सुपीरियर डिवीजन और इंफीरियर डिवीजन। और मैंने आपको ये भी बताया था जो स्टेम होता है अगर वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्टेम से कुछ पतली पतली ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं लेंटिकुलोस्ट्राइएड ब्रांचेस। इनको हम बोलते हैं लेंटिकुलोस्ट्राइएड ब्रांचेस। ब्रांचेस अगर, और अगर सिर्फ थ्रोम्बोसिस इन वेसल्स का हो, पतले पतले वेसल्स का हो, इन छोटे वेसल्स का हो, उसके अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल है, दिस विल लीड टू lacunar stroke. Very very favorite question of unstat examiners. What is lacunar stroke? So if the lenticulostriate branches of the middle cerebral artery is involved, that will lead to lacunar stroke. अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। lacunar stroke का मतलब ये होता है कि जो आपका, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एरिया को सप्लाई कर रहे होंगे, जो स्ट्रोक होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, तो वो लैक्यूना के शेप में होगा, बहुत ही छोटा सा। तो जो साइज ऑफ स्ट्रोक है दैट विल बी अप टू 2 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर। जो वेसल इन्वॉल्व है, जो आपने बोला जो लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस है, इनका जो डायमीटर है दैट इज 30 to 300 माइक्रॉन्स ओनली। तो ये बहुत ही नैरो वेसल्स है, तो इनका स्ट्रोक अगर होगा तो दैट विल बी अप टू 2 सेंटीमीटर इन साइज, जो बहुत ही छोटा स्ट्रोक होगा। और ये जो लैकुनार स्ट्रोक है ना, ये 5 टाइप के सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। बॉर्डर होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार किताब में देखेंगे, अच्छे बेलूर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। 5 टाइप के सिंड्रोम्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं और उनका लोकलाइजेशन, बस इतना ही पूछा गया है, इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं गया। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आप अगर सिर्फ और सिर्फ छोटी ब्रांचेस, लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं जिनका डायमीटर 30 to 300 माइक्रॉन्स है, तो उसकी वजह से लैकुनार स्ट्रोक होगा, जिसमें जो इंफार्क्ट का साइज होगा दैट विल बी मैक्सिमम टू 2 सेंटीमीटर। Now this can present with the following features. They can present as pure motor. They can present with pure sensory. They can present with sensory motor, और उसके बाद they can present with ataxic hemiparesis, and they can present with clumsy dysarthria, clumsy hand dysarthria.
इसका मतलब ये है कि अगर ये लैक्यूनर स्ट्रोक होता है तो इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, पर ये 5 प्रेजेंटेशन ही पॉसिबल है जो आपके लैक्यूनर स्ट्रोक है उसमें। अभी इसमें क्या होता है, जैसे अगर प्योर मोटर है तो इसका लोकलाइजेशन कहाँ है? अगर प्योर मोटर है, सिर्फ प्योर मोटर हुआ है, इसका मतलब वो लेंटिकुलर साइड ब्रांचेस इन्वॉल्व हुई हैं जो सप्लाई करती होंगी आपकी इंटरनल कैप्सूल को। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती होंगी तो इसका लोकलाइजेशन है इंटरनल कैप्सूल। और जिनको और ज्यादा अच्छा मार्क्स चाहिए उसके लिए है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अगर आप बात करते हैं प्योर सेंसरी की, तो लोकलाइजेशन होता है थैलेमस। और अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए तो दिस इज वीपीएल, वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। सेंसरी मोटर के लिए दोनों कंबाइन कर दो, थैलेमस प्लस इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस प्लस इंटरनल कैप्सूल, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एटैक्सिक हेमीपैरेसिस और क्लमजी हैंड डिसार्थ्रिया, इनको करने के लिए बेसिस पॉन्टिस इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स पॉन्स का जो बेस है ना, वो इन्वॉल्व होता है। तो जो लेंटिकुलर ब्रांचेस अगर आपके जो पॉन्स के बेस सप्लाई कर रही हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आपको एटैक्सिक हेमीपैरेसिस मिल सकता है या फिर क्लमजी हैंड डिसार्थ्रिया मिलेगा आपको। बेसिस पॉन्टिस बोलते हैं उस एरिया को। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक्स, अगेन वेरी वेरी लाइकली जो अनस्टैट एग्जाम होते हैं वो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा रहता है उनका, कि व्हाट इज लैक्यूनर सिंड्रोम या फिर व्हाट इज लेंटिकुलर स्ट्राइड ब्रांचेस। तो ये उनका फेवरेट रहता है, वन ऑफ द। दूसरा एक पॉइंट होता है, वो आप प्लीज नोट कर ले, आप गूगल में दे सकते हैं, समथिंग कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ स्ट्रोक। देखो, हम तो फिर भी थोड़े क्लिनिकल फिजिशियंस हैं, तो हम क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, तो हमें पता होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ठीक है पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं। पर एक ले मैन के लिए तो बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो हॉस्पिटल में नहीं है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए देयर समथिंग कॉल्ड एज सिंसिनाटी प्री हॉस्पिटल, मैं फिर से बोल देता हूँ, सिंसिनाटी प्री हॉस्पिटल स्ट्रोक स्क्रीनिंग स्केल बनाई है। इसके 5 कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स है सॉरी। इसका निमोनिक है बी फास्ट। अगर किसी भी पेशेंट को इनमें से कुछ भी है तो आप बोलेंगे कि इस पेशेंट को स्ट्रोक है, या फिर आप बोलेंगे आप, मतलब आपको लगता है कि इस पेशेंट को स्ट्रोक होगा, आप इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर यूज करके आप उसको स्ट्रोक रिपोर्ट करेंगे। बी का मतलब होता है लॉस ऑफ बैलेंस, अचानक से चलते चलते इफ देयर इज अ लॉस ऑफ बैलेंस। ई मीन्स होता है आईज, उसको कुछ भी डिफिकल्टी इन विजन है अगर तो। एफ का मतलब होता है फेशियल एसिमेट्री, अगर फेस की सिमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है तो। फेशियल एसिमेट्री, एसिमेट्री। ए का मतलब होता है आर्म वीकनेस, अगर आर्म्स में पेशेंट को वीकनेस फील हो रही है तो। एस का मतलब होता है स्पीच डिस्टर्बेंसेस, स्पीच डिस्टर्बेंसेस। ये स्क्रीनिंग स्ट्रोक है अगर आप बाहर हैं या फिर अगर आप नॉन क्लिनिकल हैं और फिर आप अपने पेशेंट को बताना चाहते हैं कि हाँ स्ट्रोक में क्या करना है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है स्ट्रोक को। तो इनमें से अगर कुछ भी प्रेजेंट है पेशेंट के पास में, तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, मुझे उसको एग्जामिन करना जरूरी है, मुझे उसको रेफर करना जरूरी है, हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। इनमें से कुछ भी अगर पॉजिटिव है तो। एंड टी इज फॉर टाइम टू कॉल हेल्प, टाइम टू कॉल फॉर हेल्प। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है जो दिया है आपके सिंसिनाटी प्री हॉस्पिटल स्ट्रोक स्क्रीनिंग, स्ट्रोक के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ स्ट्रोक के लिए। सिंसिनाटी बहुत फेमस है, सिंसिनाटी प्री हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्क्रीनिंग ऑफ स्ट्रोक, स्क्रीनिंग ऑफ स्ट्रोक। इसके लिए ये निमोनिक दिया गया है बी फास्ट। With this we come to the end of the series of lectures on stroke. तो कोई डाउट है आपसे तो आप पूछ सकते हैं। With this we end stroke. ओके, तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और प्लस they already done। कोई भी डाउट हो आपके पास में, you can always text me and I can answer them, you can call me as well, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। All the very best। With this we'll complete, we'll end stroke। Thank you very much, thank you apps for your support, thank you very much।
Thank you, Anab. Thank you. Thank you, Abs. Thank you, Abhishek.